dear student. Hello, please reply me through public chat if I am audible. Okay, let us start. Good morning, dear students. Myself, Dr. Viren Kumar, Assistant Professor, Agronomy, Department of Agriculture, Dolphin Institute of Biomedical and Natural Sciences, Dehradun. So, dryland farming, we will discuss today on soil compaction. So, effects of soil compaction on the crop production. So before starting this topic, I will again to summarize about the tillage. What is the tillage and what type of the tillage found, and how can it affect tillage? How can it affect their compaction of, how can compaction affect your productions? So everybody know that in the previous about what you know, along, that is the Anglo-Saxon words tillion, tillole. It means plow the soil or prepare the soil to provide the favorable condition for the proper germination and growth of the crop. So Jethro Tull is the father of tillage, and according to this definition of the tillage is to mechanical manipulation of the soil to make the soil friable for the proper germination of seed and their proper growth and development of the crop. So mostly main basic concept of the tillage practices is to provide a favorable condition to the crop for the proper growth and germination. So mostly tills is a result of the tillage practices. So tills is a different type of the tills. You can say that in your field, when we cultivate our soils, they found the different our particles, soil particles in the different phases, different size. So this size was found after the tillage practices. So tills is a result of the tillage. So if you see that in the field after tillage practices, that there are the different size of the clods or particles of the soil were found. So tills is decide that what type of the porosity in the soil, what is the capacity, how can we increase the capacity our soil. So on the basis of the tilth property, we can decide that our structure of the soils and how their capacity of the soil, then how much they can conserve or absorb the water, and how much they provide the appropriate condition for the proper germination and growth and development of the crop. So main objective of the crop is to make the soil favorable, increase the volume of the soil, and provide the create climatic condition for the proper growth and germination of the plant seeds. And we try to reduce by the tillage practices to reduce the weed population, increase the volume of the soils, and increase the water holding capacity, and also make our soil to favorable for the uptake of the nutrient and water. So these are the many objective of tillage practices. It has been already discussed in the previous classes. Today I will summarize it. So type of the tillage, we have already discussed about there are the two type of the tillage, on season tillage and off season tillage. So in the on season tillage, everybody know that mostly such type of the tillage practices conduct at the time of onset crop seasons. So when we start to go for growing crops, that time whatever the tillage practices we are doing, that time of the practices,
tillage practices is called the on-season tillage practices. So mostly these tillage practices uh, complete with two different tillage practices, preparatory tillage and after cultivation tillage. In the preparatory tillage, mostly such type of the tillage practices are done at the time of crop sowing, and in this tillage practices, mostly we try to reduce the lose our soil compactions and reduce the population, invade the weeds and the weeds and incorporate the crop residue remaining in the field after the harvesting, and this after decomposition is the organic in the soil. Preparatory tillage, first is the primary tillage, second is an layout of seedbed. In primary tillage, mostly we try to uh, cultivate the after before the sowing of the crops. So in this primary tillage practices, we mostly cultivate our field for in the make the favorable and appropriate climatic conditions for the seed sowing, and we try to uproot or destroy the weed populations and incorporate the uh, FIM in the field and crop residues also. And in secondary tillage practices, these tillage practices mostly conduct after the primary tillage. In primary tillage, mostly we uh, create the better tilth property of the soils. So in this tilth practice, mostly we conduct the 2 or 3 harrowing practices, and we plant our field and make the labeling. So we try to label our field and prepare our field for the crop sowing. So at this stage, we can also conduct the in the secondary tillage, we can also conduct the crop sowing practices. So in this tillage practices, we mostly labeled our field and make the friable or soil particles and provide the appropriate climatic conditions so that our soil particles can absorb more water and it can uptake the more nutrients, and it can provide the more nutrients to the plants. In the layout of seedbed, mostly we such type of the practices mostly conducting the vegetable crops. In these practices, we prepare the different type of the beds, flat bed, raised bed for the sowing of crop, and we also prepare in these village practices bunding and irrigation channels, etc., for the uh, better irrigations, better germination of crops. So these are the type of the tillage practices. And after cultivation tillage, this type of the tillage practices is conduct in the east crop between the two row of the crops. Mostly such type of the cultivation practices conducted, and it the after cultivation practices is also called uh, inter cultivation practices. This practices is the main objective of intertillage practices or intercultural practices is to reduce or remove or destroy the weed population found between the crop rows and make the freeable the soil, or we try to break the hard pen which are found between the uh, plant two crop row, and it provides the proper aeration and water holding capacity. So by this practice, mostly we provide in
favorable conditions for the proper growth of plant. So by the practices, the irrigation practices become very easy, and they we can apply the water, irrigation water uniformly all over the field, and these practices is also helpful in top dressing or side dressing of the fertilizer and uniformly incorporate the fertilizer all over the field. And we try to, by these practices, we try to efficiently utilize the irrigation water and fertilizers and reduce the weed population or destroy the weed population in the crop. So mostly these weeds are competitive with the crops, and they reduce their yield potential of the crops. And off-season tillage practices, such type of tillage practices, we can say that as the name is shows that off-season tillage. It means this type of the tillage practices mostly conduct at the time when uh, when we no taking any type of the crop, or you can say that there is the uncropped seasons. This type of the tillage practices mostly conduct in uncropped seasons. So when mostly off-season tillage practices also called the summer season crops, summer season tillage practices or fallow tillage. So the main objective of off-season tillage practices to open the field or open the field and uproot the weeds and conserve the water, rainwaters, and open the field and destroy the pathogens, insect eggs, and increase the water holding capacity of the soil and conserve the rainfall waters, etc. So by these practices, we can we mostly conduct it in the off season, that time when we not taking any type of the crops. So this is the off season tillage practices. So that is the when we conduct our the tillage practices, what will be the depth of tillage practices, tillage, and how much time we will, what will be the number of the tillage. So here the optimum time of tillage means the appropriate timing of tillage practices. It means the condition of the soil. Optimum time means condition of the soil. That time we can conduct the tillage. So it is totally depend on the availability of the moisture. So at the time of dry, if your field is totally dry, that time we not conduct our tillage practices, or it take the more energy and they make the big plots and hot plots. Due to these plots, we can't to sow any type of the crop because their hard plots suppress the uh, uh, seeds germinations, and they take the reduce the germination percentage and proper growth and development of the crop. So at the time of availability of moisture, dry moisture, availability of less moisture, that time we can't to conduct the tillage practices. If your soil is more wet, that time is also very difficult to conduct tillage practices because the your sayers, the soil particles at the time of wet condition, your soil particles mostly uh, sticks with your sayers, plow sayers. That time they taking more energy, and there is a difficulty to conduct or draw the plows in the field, and they after the dryness they make the hard fan beneath the sayers. तो अगर आपके सॉइल्स की ऑप्टिमम
अगर आपके फील्ड में ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर लेवल अवेलेबल नहीं है, आपका सॉइल बहुत अधिक ड्राई है, तो उस समय भी अगर आप प्लाउइंग करोगे तो वो बहुत अधिक एनर्जी लेगा, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट अधिक होगी, यानी आप ट्रैक्टर से ड्रा कर रहे हो तो फ्यूल की रिक्वायरमेंट अधिक हो जाएगी, एनर्जी अधिक लेगा, मोस्ट टाइम आपको करना पड़ेगा, मोस्ट टाइम आपको टिलेज प्रैक्टिसेस कंडक्ट करनी पड़ेगी और उसमें बहुत अधिक एनर्जी लेगा, और उसमें जितने भी क्लॉट्स बनेंगे आपके डेली बनेंगे वो बहुत बड़े बड़े होंगे, हार्ड होगा, और उस समय हम सीड की सोइंग करेंगे तो उनके जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होगी, वो सप्रेस होंगे उन बड़े बड़े क्लॉट्स के नीचे, तो उस समय भी डिफिकल्ट होगा टिलेज प्रैक्टिसेस करना। दूसरी कि आपका सॉइल बहुत अधिक वेट है, उस समय अगर अगर आप अपने फील्ड को प्लाउ कर रहे हो, उसमें टिलेज प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो आपके शेयर्स में सॉल्ट के पार्टिकल्स बहुत अधिक चिपक जाएंगे और उस समय आपको उस प्लाउ को ड्रा करना फील्ड में बहुत डिफिकल्ट होगा, और उस समय भी ये बहुत अधिक एनर्जी लेगा। और जब ये सॉइल आपके सूखेंगे, ड्राई होंगे, मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाएंगे और ये ड्राई होगा, तो आपके शेयर्स के नीचे के जो पोर्शन होते हैं, जब हम शेयर्स फील्ड में चलाते हैं, तो इस फील्ड में जब हम शेयर्स चलाते हैं तो जब ये ड्राई होगा तो जो भी शेयर्स में ये फरोस बने हैं, अब ये ड्राई होंगे तो ये बहुत, इसके नीचे का जो लेयर होगा, वो पेन होगा, वो हार्ड हो जाएगा, तो वो हार्ड पेन क्रिएट करेगा, और जब भी हम इसको इरिगेट करेंगे तो ये इजिली वाटर इस फरो से परकुलेट नहीं होगा नीचे की तरफ, तो जितना भी वाटर हम अप्लाई करेंगे या हैवी रेनफॉल होगा वो इस फील्ड में एज ए पॉन्ड की तरह हो जाएगा, यानी वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट करेगा, तो उस समय भी क्रॉप के लिए हार्ड होगा, और आपका सीड के जो प्लांट के जो रूट्स हैं वो इजिली पेनिट्रेट नहीं होंगे इस हार्ड के नीचे। तो इट इज ऑल्सो रिकॉर्ड दैट वी मस्ट टू assume that or calculate that what will be the temperature optimum moisture conditions for the tillage practices। तो मोस्टली हमारा सॉइल मॉइस्चर जो अगर आपका 50 to 75% है, तो उस समय आपका एप्रोप्रिएट कंडीशन है टिलेज प्रैक्टिसेस के लिए, और वो सॉइल टू सॉइल और सॉइल टू सॉइल वेरी करता है। इफ योर सॉइल इज लाइट देन यू मस्ट रिक्वायर मोर मॉइस्चर, if your soil is heavy then there is a requirement of moisture is very low, it means we can conduct the tillage practices in low moisture। तो अगर आपका सॉइल लाइट है, जैसे सैंडी सॉइल है, उसमें मॉइस्चर बहुत अधिक जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो उसमें मॉइस्चर आपका अधिक है, 50% से ऊपर है, 70% 75% है, तो उस समय आप टिलेज प्रैक्टिसेस करते हो उस फील्ड में, तो ये जो सैंडी नेचर है वो आपके शेयर्स में अधिक नहीं चिपकते हैं, उसमें सॉइल जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, हार्ड पेन नहीं बनेंगे, जबकि अगर आपका हैवी सॉइल है तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक रहती है, वो लंबे समय तक वाटर होल्ड करके रखता है, तो स्टिकनेस होती है, और वो जब ड्राई होता है तो उसमें कंपैक्शन अधिक होती है। तो हैवी सॉइल के जो वॉल्यूम्स होते हैं वो अधिक होते हैं, पार्टिकल्स छोटे होते हैं और स्पेस होते हैं, उसमें उनके पोर्स माइक्रो माइक्रो पोर्स अधिक होते हैं, तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लंबे समय तक रहती है। सेकेंड है डेप्थ ऑफ द टिलेज। सो व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ टिलेज? सो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द which type of the crop you are taking in the field and what type of the soil. So according to your crops and soil you can decide what will be the depth of the our tillage. So अगर आपको कि कितने डेप्थ पे हमें टिलेज कर सकते, तो इफ यू टेक द shallow rooted plants then that time you can cultivate your or you can cultivate your soils mostly 10 to 12 centimeter. If you are taking the deep rooted plant, so you must to cultivate your field above to uh, 15 to 12 centimeter. So it is totally depend on the crop type of the crops, which type of the crop you are taking. If you are taking deep rooted plant, then you must to take the deep tillage practices, deep plow, and if you are taking the shallow rooted plant, then that time you can plow shallow plow। तो ये आपकी प्लान जो होती है वो टोटली डिपेंड करता है कि
आपका रूट की लेंथ क्या है फील्ड में, उस लेंथ के हिसाब से। बिकॉज अगर आप सेलो रूटेड, अगर आप डीप रूटेड प्लांट्स ले रहे हो और आपने सेलो आप टिलेज प्रैक्टिसेस की है, सेलो प्लानिंग की है, तो उस डीप रूट प्लांट के लिए, रूट्स के लिए प्रॉपर पेनिट्रेट होने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सेलो रूटेड किया है। अगर सपोज करो कि ये आपकी सॉइल लेयर्स है और आपका रूट लेंथ किसी क्रॉप का, ये सपोज करो आपकी क्रॉप है और इसकी रूट लेंथ ये है, और आपने सैलो में इतना ही कल्टीवेशन, इतनी ही एरिया कल्टीवेट किया है, आपने इतने पे ही टिलेज प्रैक्टिसेस किया है, इतना प्लॉ किया है, तो इसका रूट यहाँ के बाद ये हार्ड पैन हो जाएगा। हार्ड होगा तो इसको पेनिट्रेट करना इस क्रॉप के रूट के लिए डिफिकल्ट होगा, इजी नहीं होगा, तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगा। और प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगा तो वो प्रॉपर सॉइल मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। तो ये भी डिपेंड करता है। एंड नंबर ऑफ टिलेज, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द कि उसमें कितने आपके किस टाइप के आपका सवाल है। अगर लाइट सवाल है तो उसमें आपको नंबर ऑफ टिलेज प्रैक्टिसेस करने की कम रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपका हैवी सवाल है तो नंबर ऑफ टिलेज प्रैक्टिसेस अधिक करने होंगे। और इसके अलावा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वहां पे वीड पॉपुलेशन क्या है, क्रॉप रेजिड्यूज की क्या है कंडीशंस, और सॉइल किस टाइप का है। तो सॉइल अगर लाइट है तो उसमें प्लॉइंग्स आप 1 to 3 आप प्लॉइंग्स में यह अरेंज करके आप कर सकते हो, वो एनफ होगा। अगर आपका सॉइल हैवी है तो उसमें 3 to 5 रिक्वायरमेंट होगी जनरली इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि हैवी सॉइल में आपका 3 to 5 प्लॉइंग्स रिक्वायरमेंट होती है, और लाइट सॉइल में 1 to 3 या 2 to 3 प्लॉइंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये प्लॉइंग, नंबर ऑफ प्लॉइंग्स या नंबर ऑफ टिलेज इंक्रीज कर सकता है अगर वहाँ पे वीट की डेंसिटी या वीट पॉपुलेशन अधिक है और क्रॉप के रेजिड्यूज अधिक हैं, तो इनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, अपरूट करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए नंबर ऑफ प्लॉइंग इंक्रीज कर सकते हैं। तो देयर आर द मेनी प्लाउज विच आर यूज फॉर according to situation special purpose. So you can say that moldable plow, tractor drawn, it is used for the deep plowing and inversion. It means the mode plow mostly used for the deep plowing and inversion of the crop residue and uproot the weeds. Plow animal, it is also used incorporate the manures and fertilizers and plant residue. Disc plow, it is used for the cutting the weeds and crop residue, incorporate and the grass. And country plow, mostly this plow is called the multi-purpose plow. It is mostly used in all type of the tillage practices like primary, secondary, and seedbed, and you can also use this country plowing after cultivation tillage practices. So soil compaction. What is the soil compaction? So in the tillage practices, these words mostly use if we not conduct the soil tillage practices, that our soil will be compact, more compact, and it reduce the moisture absorption, and it reduce the proper growth of the roots. So how can we decide that how can we identify the compaction of the soil? Yeah, what is the compaction of the soil? The soil can be a serious, the soil compaction can be a serious and unnecessary form of soil degradation that can result in increases soil erosion and decrease the crop productions. So the compaction of soil is the
compress of soil particles into a small volumes, which reduce the size of pore space available for air and water. So compaction is the mostly when we found that there is a when the volume of the soil particles is found very close and the volume of the pore space macro or micro is very less, and there is a this is the mostly this type of the characteristics or structure of the soil is so the degradation of the land. तो जब अगर सॉइल का कंपेक्शन कब होता है, जब आपके सॉइल के पार्टिकल्स बहुत अधिक क्लोज हों, उसमें जो पोर स्पेस हैं वो बहुत कम हो, तो वो कंपेक्शन होता है. तो कंपेक्शन की कंडीशन क्या होता है कि मोस्टली वी नो दैट द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल इज देयर इज द 50% is the solid particles and 50% is the space. And in this 50%, 20 to 30% is 30% spaces are fulfilled with the water and 20 to 30% are fulfilled with the airs. So suppose that this is the soil particles, their half is found solid and half is the pore space, and in this half pore space, half space is fulfilled with the water and half is space found with the वाटर. जो ये आपका सॉइल पार्टिकल्स होता है, तो इसमें आधे स्पेस जो होते हैं वो सॉलिड होता है, आधे में इस पोर स्पेस पाए जाते हैं, और इस आधे पोर में से आधे पोर स्पोर में से जो होता है वो वाटर से फुलफिल होता है, आधा पोर स्पोर एयर से फुलफिल होता है, और 45% ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स होते हैं, ये 45%, और ये 5% आपके ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं. तो ये जो जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो साइकिल्स होता है. तो अगर तो एक्शन है, अगर पोर्स अगर उसके वॉल्यूम्स डिक्रीज होते हैं तो सॉइल एक्शन. अच्छा, इसका तो लॉस क्या है अगर सॉइल कंपैक्शन? यू कैन सी दैट कि अगर सॉइल कंपैक्शन अधिक होता है तो एरेशन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें कम होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी. मोस्टली वाटर के थ्रू ही लेते हैं, और जब इसमें वाटर की अवेलेबिलिटी कम, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी कम होगी. तो दिस फैक्टर अफेक्टिंग our crop production. So soil composition is also one factor which are affecting the production. तो ये जो soil production से soil compaction से ये इसमें टिलेज जो मोस्टली ये होता कैसे है, ये जो कंपैक्शन होता है वो बार बार कैसे होता है. तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जब हम टिलेज प्रैक्टिसेस करते हैं तो अगर हैवी व्हीकल्स मूव कराते हैं तो उनके व्हील से ये सप्रेस होकर इनके पार्टिकल्स यहाँ कंपैक्ट पोर्शंस बनाते हैं. तो ये पोर्शंस आप जो देख रहे हो ये कंपैक्शन है. तो यहाँ पे क्या होगा, पोर्स के वॉल्यूम्स या पोर्स के स्पेस कम हो जाएंगे, फिर यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, यानी यहाँ पे कंपैक्शन होने की वजह से अगर हम इरिगेट करेंगे ये पोर्शन तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन हो, और जबकि यहाँ पे देखो आप पाओगे कि ये वाटर इजिली एब्जॉर्ब करे. तो ये डिफरेंसेस है. तो ये मोस्टली होता कैसे कि जैसे हम हैवी कंपैक्शन कैसे होता है कि बार बार हम ट्रैक्टर से प्लॉइंग कर हैवी आपके फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो वो आपके सॉइल को कंपैक्ट. अब ये इफेक्ट ऑफ सॉइल कंपैक्शन ऑन soil quality and crop productions. So first is the soil pore space to becomes very small. So when we move the heavy vehicles in the field, we found that they compact our soil
and after compaction of the soil, we found that the soil pore space becomes very small, and they decrease the water holding capacity, and they decrease the infiltration rate of the water in the soil, and it also increase the water logging condition on the surface of the soil, and more runoff of the water, and it is also responsible for the uh, soil erosions. You can see in this diagram that is the more pore space, and there is the compact or very small pore space. So when we apply, or there is the water infiltration or air's infiltration in the uh, soils particles is found very more volume more, and in this condition we found that very less water infiltrate or penetrate इन द सॉइल पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल सॉइल है इसमें पोर स्पेस भी नॉर्मल है, तो यहाँ पे वाटर इन्फिल्ट्रेट या एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है, एयर की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी अधिक है, जबकि कम्पैक्ट सॉइल में यहाँ पे पोर स्पेस बहुत कम है, तो यहाँ पे इजिली जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इजिली एयर मूव नहीं कर रहा है इस फील्ड में। तो आप देखेंगे कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे कंपैक्शन है, यानी हैवी व्हीकल ले जाने से उनके व्हील से यहाँ पे कंपैक्शन हो गया, कंपैक्ट हो गया। अगर आप इस फील्ड को इरिगेट करोगे तो यहाँ पे वाटर लगिंग कंडीशन होगा, जबकि अदर पार्ट्स में आप इजिली देखोगे वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये इफेक्ट है, एंड इट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होल्डिंग ऑलरेडी टोल्ड अबाउट। सो और ये प्रॉपर प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब गुड सॉइल है और कंपैक्ट सॉइल है यहाँ पे दो, तो यहाँ पे प्रॉपर आप देख रहे हैं कि रूट का ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है, और यहाँ पे रूट की ग्रोथ कम हो गई है, जिसकी वजह से प्लांट का भी ग्रोथ रुक रहा है। अब प्लांट का ग्रोथ क्यों रुक रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रूट की ग्रोथ होने से वाटर की एबिलिटी या वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अधिक हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स अधिक एब्जॉर्ब करता है, इसलिए फुल न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करता है, वाटर यूटिलाइज करता है। लेकिन यहाँ You are currently the only person in this conference.